एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई प्रधानमन्त्रिणः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्षस्य केपी शर्मा ओलीनश्च मध्ये ह्यो मेलवार्ता सम्पन्ना वर्तते सिंहप्रासाद वर्तिनी प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्पन्ने मेलने अनैर्मध्ये सामूहिक राजनीतिक परिस्थितिर्विषये विमृष्टमिति प्रधानमन्त्रिणः संचार संयोजक सूर्य किरण शर्मा अज्ञापयत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः संघीय सर्वकारेण प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्बं निर्णयं प्रापयते इति प्रतिबद्धतां व्यनक्ति बालवाटार वर्तिनी प्रधानमन्त्री निवासे ह्य सप्तानमेव प्रदेशानां गृहान्तर विषय मन्त्रिभिः सह विहिते सामूहिक मेलने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः आन्तररूपेण प्रहरी समायोजनस्य प्रक्रिया अग्रे वर्धितास्थिति ज्ञापितवानिति मेलने सहभागी बागमती प्रदेशस्य आन्तर विषय विधि मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ असूचयत् प्रदेशानां आन्तर विषय मन्त्रिणः प्रधानमन्त्रिणं प्रचण्डं संविधानत प्रदेशान् अधिकार सम्पन्नान् संघीयतां सुदृढां विधातुं च आवश्यकाधिनियमस्य निर्माणं संशोधनं कार्यविधि निर्धारणं च कर्तुं प्रहरी समायोजन प्रक्रियां प्राथमिकतया निर्णेतुं च याचना प्रस्तुत्य ध्यानाकर्षण पत्रम् अर्पयन् तत्पूर्वं ह्य एव प्रदेशानां आन्तर विषय मन्त्रिणः उप प्रधानमन्त्रिणा नारायण काजी श्रेष्ठेन सहापि मिलित्वा संविधानस्य एकालाधिकारस्य सूच्यां विद्यमानाय प्रदेश प्रहरी सम्बद्ध व्यवस्थाया क्रियान्वयनाय ध्यानाकर्षणं व्यदधुः उप प्रधान रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का कथयति देशस्य विकासाय त्रयाणां स्तराणां सर्वकारै एकीभूय अग्रे वर्धितव्यम् सुर्खेत जनपदे ह्य चिंगाड महोत्सवं क्रीडा कार्यक्रम च उद्घाटन उप प्रधानमन्त्री खड्का त्रयाणामेव स्तराणां सर्वकारै मिलित्वा कार्येषु सम्पादितेषु सत्सु जनापेक्षा अनुसारेण विकास सम्भविष्यति इति अवदत् उप प्रधानमन्त्री खड्का संघीयताया पूर्ण क्रियान्वयनाय संविधान प्रदत्तानां अधिकाराणां स्थापनाय च संघीय विधेय क्रियान्वयनम् अन्तिम चरणं प्राप्तमस्तीति अज्ञापयत् कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भूषाल भाषते कृषि क्षेत्रस्य समस्यानां समाधानत्वेन शीघ्रं राष्ट्रिय कृषि नीति आनीयमाना वर्तते राष्ट्रिय कृषक सञ्जाल नेपालेन ह्य काठमाडौँ आयोजितायां कृषि अनुदान वित्त सम्बद्ध नीति विषयिण्यां राष्ट्रिय कार्यशालायां मन्त्री डाक्टर भूषाल अकथयत् कृषि क्षेत्रस्य आत्मनिर्भरताय विषयं प्राथमिकतां समाविश्य नीति निर्माणस्य सम्पूर्ण प्रक्रियाः पूर्णस्य हेतोः कच्चित् दिनेषु इयं मन्त्री परिषदि प्रस्तोष्यते स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत वदति नेपाले अन्तर्बाह्य स्थानान्तरणस्य कारणेन सृष्टाः समस्या विकरालताया हेतु एतस्य समाधानम् आवश्यकं वर्तते स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयस्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासन संगठनस्य च सहकार्येण गतदिने काठमाडौँ आयोजिते जनसंख्या स्थानान्तरणयो व्यवस्थापन सबलीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रमे मन्त्री बस्नेत अवदत् योजनाबद्ध विकासावधारणाय प्रभावकारी क्रियान्वयनस्य शासकीय क्षमता सुधारस्य च माध्यमेन विद्यमान समस्या समाधातुं शक्यते संघीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी कथयति देशस्य आर्थिक विकासाय स्तरस्तरसैव सर्वकाराणां मध्ये समन्वय सहकार्य आवश्यके स्तः विराटनगरे पूर्वेद्यु आयोजिते स्थानीय स्तराणां सदभ्यासादान प्रदानान्तर क्रिया कार्यक्रमे असौ स्थानीय स्तरै मार्गचित्रं निर्माय आवश्यकं क्रियान्वितं बलं प्रादात् असौ अवदत् संघीयताया सबलीकरणाय स्थानीय स्तरै जनताया आवश्यकताया अनुसारं विकास निर्माण कार्येषु वित्तं केन्द्रीकर्तव्यम् नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति शेरबहादुर देउवा भैरवा वर्तिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलं पूर्णरूपेण सुचारू सञ्चालितुम् आवश्यक प्रयास विधीयते इति प्रतिबद्धतां व्यनक्ति विमानस्थलं पूर्णरूपेण सुचारू सञ्चालितुम् भूमिकाया निर्वहणाय सिद्धार्थोद्योग वाणिज्य संघस्य रूपन्देही शाखाया ज्ञापनपत्रं गृह्णन् ह्यः सभापति देउवा व्यवसायिनां याचनां प्रति आत्मन अनुकूलतास्ति विमानस्थलं पूर्णरूपेण सञ्चालनाय प्रयत्यते इति च प्रावोचत् सभापति देउवा नियमितोड्डयनेन लुम्बिनी क्षेत्रे पर्यटकीय गतिविधयः वर्धिष्यन्ति इति विश्वासं व्यक्तवान्
सर्वकारेण बन्दी जनानां अनुकूल चिन्तनस्य विकसनस्य उद्देश्येन योग साधनाय अवधारणा पुरस्क्रियते। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतेषु निकायेषु च स्वजानस्य रूपेण योगाभ्यास संस्कृते अग्रे वर्धनात्मकस्य उपप्रधान गृहमन्त्रिण नारायणकाजी श्रेष्ठस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशस्य सकलेषु कारागारेषु योग शिबिरं सञ्चाल्यमानं वर्तते। गृह मन्त्रालय पूर्वेद्यु उपविष्टेन उपवेशेन नखु कारागारात् शिबिरं सञ्चालयितुम् अन्येषु कारागारेष्वपि तदनुरूपमेव शिबिरम् आयोजयितुं च निर्णीतं वर्तते। नेपाल विपश्यना केन्द्रस्य धर्मसेवकस्य सुशील साहस्य अनुसारेण केन्द्रसेवा व्यवस्थापनेन शिबिरं सञ्चाल्यते। सुदूर पश्चिमस्य बैतडी जनपदस्य झुलाघाट स्थानात् स्वप्रारप्स्यमानया नेकपा एमाले दलस्य मध्यपर्वतीय लोकमार्ग पदयात्रा पूर्वकार्यं प्रपूरितमिति ज्ञापितं वर्तते। एमाले दलस्य सुदूर पश्चिम प्रदेश समित्या ह्य आयोजिते पत्रकार सम्मेलने प्रदेश प्रभारी छविलाल विश्वकर्मा पदयात्रायै पूर्वकार्यं प्रपूरितमिति अज्ञापयत्। काष्ठमण्डप महानगरपालिकाया असैव मार्गशीर्षमासस्य 27 दिवसात् स्वस्य 32 वडा क्षेत्रेषु तम्बाकूजन्य पदार्थानां विक्रयणं पूर्णरूपेण निषेध्यते। महानगरपालिकाया स्वास्थ्य विभागस्य अनुसारेण 27 दिवसात् लचकज पोटलिकायां स्थापितानां तम्बाकूजन्य पदार्थानां विक्रयणं भण्डारणं प्रयोगं च पूर्णतः निषेद्धुं पूर्वकार्यं विहितं वर्तते। महानगरपालिकाया स्वास्थ्य विभागस्य प्रमुखस्य रामप्रसाद पौडेलस्य अनुसारेण तम्बाकूबट्टी तम्बाकू चूर्णम लचगज पोटलिकायां स्थापित अप्रशोधित तम्बाकू एवं विधा मुखे संस्थाप्य रस स्वादका पदार्थाश्चेति तम्बाकूजन्य वस्तूनां भण्डारणं विक्रयणं प्रयोगश्च कर्तुं न शक्यन्ते। केनचित् जनेन विक्रयणं विहितं दृष्टं सत् नगर प्रहरीभिः तथाविध सामग्र्य निग्रहीष्यन्ते इत्युक्तं वर्तते। तम्बाकूजन्य वस्तूनां प्रयोगेण व्यक्तीनां स्वास्थ्ये जायमानं प्रतिकूल प्रभावं रोद्धुं अधिनियमस्य व्यवस्था कठोरेण क्रियान्वयमानास्ति स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पौडेलः असूचयत्। श्रुतो विहीनै 10 लाख रूपैकै सह एको भारतीय नागरिक वीरगंज स्थानवर्तिनः सीमा सुरक्षा गुलमात परिचालितन सशस्त्र प्रहरीण संयुक्त समूहेन नियन्त्रितो वर्तते। रक्सोल स्थानात् मोटरसाइकल यानेन वीरगंज स्थानं प्रति आगमनावस्थायां सीमा प्रवेशबिन्दु निरीक्षणस्य क्रमे श्रुतो विहीनै 10 लाख रूपैकै सह भारतस्य चम्पारण जनपदस्य पूर्वभागस्य रक्सोल क्षेत्रस्य अरुवा निवासी 23 वर्षीय उमेश यादव प्रहरीण नियन्त्रितो स्थिति ज्ञापितं वर्तते। गण्डकी प्रदेश सर्वकारेण पोखरा स्थानं पर्यटकीय राजधानीम् उद्घोष्टुम् अध्ययन समिति संघटिता अस्ति। एतदार्थिक वर्षीय नीति कार्यक्रमं क्रियान्वितुं गण्डकी प्रदेशस्य नीति योजना आयोगस्य उपाध्यक्षस्य डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटा विधस्य संयोजकत्वे अध्ययन समितिरेषा संघटिता अस्ति। एतत्पूर्वं प्रदेशस्य उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयेन पोखरा स्थानस्य पर्यटकीय राजधानी रूपेण विकसन सम्बद्धं संक्षिप्तम् अवधारणापत्रं निर्मितम् आसीत्। राष्ट्रिय बालाधिकार परिषदा एतद्वैक्रमाब्दस्य बाल संरक्षण मापदण्डस्य प्रारूपं सार्वजनिकृतं वर्तते। परिषदा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानेन च ह्यो ललितपुरे कार्यक्रम आयोज्य 75+200तम विक्रम वर्षीयस्य बालबालिका सम्बद्धाधिनियमस्य 150तम प्रकरणेन प्रदत्तस्य अधिकारस्यानुसारेण बालबालिका विरोधिनी हिंसां रोद्धुं बालबालिका संरक्षितुं च बाल संरक्षण मापदण्ड निर्मित इति ज्ञापितमस्ति। भारतस्य उत्तराखण्ड राज्ये एकस्यां भूमिगत शरण्यां 17 दिनेभ्यः अवरुद्धा 47 श्रमिकाः गतरात्रौ भूमिगत शरण्यतः सकुशलम् उद्धृताः सन्ति। भूमिगत शरण्य निर्माणस्य क्रमे दुरापण्येन भूस्खलनेन इमे श्रमिकाः शरण्याम् अवरुद्ध्य असहायावस्थां प्राप्ताः आसन्। इजरायल देशस्य हमास नाम्ना इस्लामीय योद्धृ समूहस्य च मध्ये अतिरिक्तं दिनद्वयं युद्धविराम कर्तुं सहमतिर्धृता वर्तते। 4 दिवसीय युद्धविरामस्य अवधेः ह्यः समाप्तिर्दिवसे समूहद्वयस्य मध्ये अतिरिक्तं दिनद्वयं युद्धविराम वर्धयितुं सहमतिर्धृता इति मध्यस्थकर्तृराष्ट्रं कतार देशो ज्ञापयति। इति समाचारः।